going to start the new chapter of class 8 science, that is chapter number 4, materials, metals and non-metals. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, in this chapter we are going to discuss about the metals and non-metals. We will discuss about the physical properties of metal and non-metal, and then we'll discuss the chemical properties of both of these two. But before starting the physical and chemical properties, we need to understand some basic information about all these. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से, बेसिक इंट्रोडक्शन से. After that, we will come on to the physical and chemical properties. So, first of all, we will discuss about the matters, elements and atom, etc. भी आप अपने आसपास देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं. Like you have books, you have pencil, you have table, chair, bed, etc. All these things which are present around you is known as matter. The things which are present around you are known as matter. So metal की अगर हम proper definition की बात करते हैं, so we can say that matters are the things which occupy space and which have the mass. तो जो चीजें जिनका कुछ mass होता है, so पहले हम एक बार metal की बात कर रहे हैं, फिर what is the meaning of the matter? Matters are the things which occupy space and which have a definite mass. They call as matters. तो all the things like table अगर हम बात करें, हमारे आसपास टेबल है, तो टेबल का एक मास होगा and table is occupy the space also. So matter are the things which occupy space, and have mass. These things are known as matter. So ये तो बात हुई मैटर की. Now let's see how these matters are formed of. Matters बनते किससे हैं? These matters can be formed from the elements or the compounds or the mixture. So these are the different kinds of the matter which are made up of different things. So अलग-अलग चीजों से बने हुए हैं. But here we will discuss about the elements. So let's see what are the elements. Elements क्या होता है? These are the all important definitions also written here. You can pause the video and write these definitions in your notebook. These are very important definitions. So अब हम element के बारे में बात करने वाले हैं कि element क्या होता है. The element is the basic unit. Element is the basic unit of matter. It's a basic unit of matter. यानी कि एक ऐसी चीज जिससे कि matter form हो रहे हैं. That thing known as element, and this thing cannot be, इसे हम अभी आगे और बता रहे हैं. This is the basic unit of matter which cannot be broken down into any substance by any way. Which cannot be broken down into any substance by any way. किसी भी तरीके से, whether is a chemical method or a physical method, किसी भी method से जब आप उसको break down कर रहे हो, physical तो नहीं हम बोल सकते, but basically the chemical process could be here. By any chemical method, we can't broken down these substances into any more substances. These are known as the elements. So elements are the basic unit of matter which cannot be broken down into any substances by any way. They are known as elements. इन्हें हम बोलते हैं elements, and these elements, they are very important because elements are present around us. हर एक matter जो है वो form हो रहा है through the elements. If you have seen the periodic table जो होती है पूरी tables की arrangement है जिसमें सभी के सभी elements को proper space दिया गया है according to their chemical properties. They are placed into the different groups. तो आपने अगर कभी भी देखा हो तो उसमें जितने भी जो आपको डिफरेंट चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं हर एक बॉक्स के अंदर, these all are elements. वो सब के सब क्या है? They are elements. So अगर हम elements के examples की बात करें कि क्या क्या चीजें हैं जो elements हो सकती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, these all are the examples of elements. ये सब के सब क्या है? Elements. And these elements cannot be broken down further into any substances by the chemical methods. That's why we are calling that these are the basic unit of the matter. ये matter को बनाने वाली basic units है. But अगर हम बात करें elements की, the elements formed from the atoms. Elements खुद किससे बने हैं? Elements are formed from the atoms. ये बने हैं atom से. अब atom क्या होता है उसकी भी हम definition देख लेते हैं because it's also very important.
Atom, we can say that atom is the smallest particle of the element. Element का जो सबसे छोटा particle होता है उसे हम बोलते हैं atom. Is the smallest particle of the element that retains the chemical property of elements. ये सारी की सारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे, इनके अंदर वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो एलिमेंट की खुद की हैं. So this is the definition of atom. Atom is so small. Earlier, the scientists, when they discovered the atom, they found that atom cannot be divided further. Atom जो है वो आगे divide नहीं किए जा सकते. But after that, later on, lots of the studies was done on this about the atoms. And then scientists found that atom has the three important components that are known as subatomic particles. So the atom contains three important subatomic particles, that is proton, electron and neutron. So proton, electron and neutron, these three, they make the composition of the atom. ये atom को form करते हैं. Basically, in the case of the atom, we can say that it has a structure that is known as nucleus. Nucleus होता है atom का, and around the nucleus they have electrons. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड इन द न्यूक्लियस द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स विल फॉर्म. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन evolving around the nucleus in the orbit. So this kind of structure is present here. We can write the particles, that is the proton, electron, and the third one is neutron. These proton and neutron, they remain into the nucleus, that center part, and electrons they remain revolve around the nucleus. ये nucleus के चारों तरफ revolve करते रहेंगे, घूमते रहते हैं. तो ये कुछ basic सी definitions हैं जो हमें समझनी है. But in this chapter we are going to discuss about the detailed study about the metals and non-metals. These elements, जो हमने यहाँ पे elements लिखा है, these elements can be divided into the two main categories, that is metals and non-metals. Third one is also there, that is the metalloids. About metalloids we will discuss at the end of the chapter, but basically we will discuss about the two main groups of the elements, that is the metals and non-metals. First of all, we'll discuss about the physical properties of metals and non-metals. After that, we'll do the chemical properties of metals and non-metals. Now we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. पर पहले अगर कोई आपसे पूछे कि क्या metals क्या हैं और non-metals क्या है, तो आई एम श्योर दैट आप मेटल्स के बारे में तो बता सकते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, विच आर प्रेजेंट अराउंड अस. दीज थिंग्स आर द मेटल्स. बट नॉन मेटल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद द नॉन मेटल्स. बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज थिंग्स, अगर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली बहुत अच्छे से, at the end of this portion, then you will be able to identify that what is the metal and what is a non-metal. तो ये आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. So let's start the discussion about the physical properties of metals and non-metals. हम दोनों की ही physical properties साथ की साथ compare करते हुए discuss करेंगे, जिससे ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा. And we will discuss the physical properties in the following points. So these are the points under which we will discuss the physical properties of metals and non-metals. First point is the physical state. Then we'll discuss the malleability, then ductility, luster, conductor of heat, conductor of electricity, hardness and sonority. So these are the points about which we will discuss about the metals and non-metals. So let's start. फिजिकल प्रॉपर्टी. जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब द एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट हाउ दिस थिंग लुक लाइक, अबाउट द शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड करते हैं. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, दैट इज द फिजिकल स्टेट. So first of all, let's discuss the properties of metals and non-metals in their physical state. Now, let's see the physical states of metals and non-metals. All the metals, generally, all the metals are solid at the room temperature. हर एक metal जो होती है generally वो room temperature पे solid state में मिलती हैं. Not any metal exists in the gaseous state. कोई भी gaseous state में मिलने वाली metals नहीं है. यहाँ पे हम एक exception भी देखेंगे.
सॉलिड स्टेट तो हमने बोल दिया कि जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, these all metals are present in the solid state. जो हम जानते हैं gaseous state में कोई metal है ही नहीं, but there is one exception that is the mercury, that you should also write that mercury is the metal which is present in the liquid state. So this is the metal which found into the liquid state. You should write this exception also. It's very important. So ये तो बात हुई मेटल्स के बारे में. अब आते हैं नॉन मेटल्स पे. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसेस. जनरली सॉलिड या गैसेस स्टेट में मिलती है नॉन मेटल. सॉलिड और गैसेस हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एक्सेट्रा. These are the some non-metals that which are found into the solid form. कार्बन आपने देखा है, कार्बन that you can compare the कार्बन रिजेंबल कर सकते हो the चारकोल, जो आपको देखा है कोयला जिसे हम बोलते हैं कोक. This is a form of the carbon. So it's a solid structure. So it's found in a solid form. Similarly, the non-metals can be exist in the gaseous form. तो gaseous non-metals जो है that is the hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. You can know about these. That these are the non-metals but they found in the gaseous form. Here also, in the case of non-metal also, we found one exception. The exception of non-metals related with the non-metals is the bromine. Bromine is a non-metal which generally found in the liquid state at room temperature. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने फिजिकल स्टेट के जो जनरल एग्जांपल्स हैं वो भी देखे और साथ के साथ हमने एक्सेप्शंस भी देखे हैं. These exceptions are very important. In the case of the metals, only mercury is the metal which found in the liquid state, whereas in the case of the non-metal, bromine is the example which is the non-metal and still it's found in the liquid state at room temperature. So ये हमारी बात हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो की थी फिजिकल स्टेट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज malleability. Property by which allow the metals to be hammered into the thin sheets or the foil is called as malleability. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मेटल्स को अगर हम बहुत बीट कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली बीटिंग कर करके मेटल्स को थिन शीट्स या फॉइल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज malleability. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So the property by which allow the metals to be hammered into thin sheets or foil called malleability, and this property is very important for us. यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं. पहले कौन सी मेटल्स है जो ये प्रॉपर्टी शो कर रही हैं. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ऑल्सो. वी कैन और ऐड द कॉपर. सो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम and copper. These are the metals which are showing the malleability. इनके एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं. अगर आपको याद हो कि दैट स्वीट्स के ऊपर एक लेयर होती है सिल्वर फॉइल की, दैट शाइनी द फॉइल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रेजेंट इन द स्वीट्स, दैट इज द सिल्वर फॉइल. ये कैसे बनी है? बिकॉज द सिल्वर इज अ मेटल एंड इट शो द मैलिबिलिटी. जब हम सिल्वर को कंटिन्यूसली बीट कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, तो जो सिल्वर है वो फॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती है. सो सिल्वर फॉइल वी नो. सिमिलरली द एल्यूमिनियम फॉइल इज ऑल्सो अवेलेबल एट अवर होम विच वी यूज टू रैप द फूड एंड some different items. So this aluminium foil. Similarly, the gold and copper are also converted into the thin sheets. This property known as malleability. Here one exception is also there. एक exception यहाँ पे भी मिलेगा. Exception almost हमें हर तरीके की physical properties में देखने को मिलेंगे. Zinc is a metal. Zinc एक metal है, but still zinc जब हम zinc को hammer कर रहे हैं, जब zinc को beat करते हैं, then it can broken down. So zinc do not show the malleability. It's broken down. It's not a malleable metal. But when we talk about the non-metals do not show this kind of properties. Non-metal में हमें property नहीं मिलती because generally the non-metals are solid or the liquid in the form. हम बोल सकते हैं non-metals जो है या तो वो solid form में available है या gaseous form में. Solid और gaseous form में ही available होती हैं. So solid form की अगर हम बात करें like the sulfur हो गया, ये carbon हो गया, अगर उन non-metals को हम hammer करते हैं तो वो टूट जाएंगी. They do not show the malleability. This kind of property is known as brittleness, or we can say that non-metals are brittle in nature. They are brittle. Non-metal जो होती हैं वो brittle होती हैं, वो malleable नहीं है क्योंकि उन्हें हम sheets में convert नहीं कर सकते.
Rest all non-metals are present in the gaseous form, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन्हें हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से शीट्स में. एंड ब्रोमाइन इज अ लिक्विड, तो उसे भी नहीं कर सकते. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द मेटल शो द malleability, almost all metals show the malleability, whereas non-metals do not show the property of malleability. और malleability में हो क्या रहा है? We can convert them into the thin sheets or the foil by continuous beating or hammering. This property known as malleability. Now come on to the next important property, that is the ductility. Ductility is the property which allow the metals to be drawn into the thin wires. This is known as ductility. अगर हम metals को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी. एग्जांपल्स वी नो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे शो द डक्टाइलिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर. हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं गोल्ड का, सिल्वर का. Similarly, the copper, I am writing the symbol also so that you can be familiar with symbols. Cu is the formula of copper. Copper, aluminium, magnesium, etc. So these are the metals which can be used to make the wires. In metals से हम wire बना सकते हैं. That's why we are saying that metals are ductile. They are showing ductility. यहाँ पे आप कॉपर के वायर्स के बारे में अगर बात करते हैं, यू आर फैमिलियर विद द कॉपर वायर्स. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स यूज होती है उनमें जो वायर्स यूज की जा रही है इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर एक मेटल की वायर होती है, बाहर रबर का शीट प्रेजेंट होती है इंसुलेटेड, पर अंदर जो है वो कॉपर वायर प्रेजेंट है. इट्स फॉर्म ड्यू टू द डक्टाइलिटी ऑफ द कॉपर. ये चीज हमने यहाँ पे देखी है. सिमिलरली हम बात कर सकते हैं टंगस्टन की. टंगस्टन इज अ मैटर, tungsten is a metal which is used to make the filament of the electric bulb. जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने में काम आता है because of the ductile property. When we talk about the non-metals, non-metal की अगर हम physical property देख रहे हैं ductility के केस में, then we can say that non-metals don't show ductility because they are solid. But in the solid form also they are brittle. अगर हम इनको वायर बनाने के लिए बीट करेंगे, कोशिश करेंगे, then they can be broken down easily. They are not showing any ductility property. Rest the non-metals are present in gaseous form. So we can say only the metals show the ductility, but non-metals they are not show ductility. Now come on to the next physical property, that is the luster. It means the shiny appearance. This property is the physical property where we can say that shiny appearance is given by the metals. Metals have the shiny appearance, and in the case of the non-metals we can say that non-metals do not have the shiny appearance. आपने देखा हो अगर हम कोल कार्बन की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें कोई shiny appearance नहीं मिल रहा. But generally the metals like gold, silver, platinum, अगर हम इनकी बात करें, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया है या फिर प्लेटिनम हो गया, these metals they show the shiny appearance. They have shiny surface, and the shiny surface it can reflect the light also. लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो हमें और भी अच्छे से चमकती हुई दिखाई देती हैं. So these metals show the luster. They have the lustrous property, but non-metals they do not have the lustrous property. They do not show any shiny appearance. But some exceptions are there. In the case of non-metals, in the case of the non-metals, we can include that iodine. Iodine is a non-metal. It's another example of non-metal. Iodine and the graphite, they have some amount of lustrous. They show some lustrous property. यानी कि कुछ हद तक जो shiny appearance है वो आयोडीन और ग्रेफाइट से हमें मिलती है. ये non-metal है, but still they have the lustrous property. So these are the exceptions, and I already told you all the exceptions are very important. So you should write these exceptions also. So this is about the lustrous or the shiny appearance. Now come on to the next property, that is the conductor of heat. The metals are the good conductor of heat. Almost all the metals are good conductor of heat. So metals are good conductor of heat. Generally, if we write the examples, we discuss about the examples which metals are the good conductor. We can say that the silver. Silver is the metal which is the best conductor, which comes on the number 1 in the conductivity of the heat. Silver. Then we can write the copper, aluminium, iron. यहाँ पे हमने symbols लिखे हैं, थोड़ा सा आपको symbols से भी familiar होना चाहिए. Ag is the symbol of aluminium. Ag जो है वो aluminium का symbol है.
copper, Cu, then Al is aluminium, and Fe is the symbol of iron. So these are the metals which are the good conductor of electricity, good conductor of heat. Heat का conductor है. That's why they are used in the different things. Like copper को हम देख सकते हैं that copper is used for making the different utensils. Silver is also used. तो इन functioning की वजह से हम इन्हें बहुत सारी अपने activities में जहाँ पे utensil formation या water boiler जैसी चीजें बनाने में काम में लेते हैं, जहाँ पे हीट पास करवानी होती है मेटल्स के थ्रू. तो ये हमने बात की है मेटल्स के बारे में. इन द केस ऑफ द नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. नॉन मेटल जो होती है, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर poor conductor. They do not allow the heat to pass through them, so they are poor conductor. They are poor conductor. Again I said you that some exceptions are there in almost all physical properties. यहाँ पे भी exception है, and exception is the diamond. Diamond is the form of a carbon. एक नॉन मेटल है कार्बन, एंड डायमंड जो है वो कार्बन की ही फॉर्म है, एंड डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो वी कैन से दैट दिस इज द एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है. Generally, the non-metals are poor conductor, but diamond is the good conductor of heat. Now, come on to the next physical property, which is conductor of electricity. Metals are again, they are good conductor of electricity also. Like the conductor of heat, they are good conductor of electricity. So, generally, all the metals are good conductor of electricity. They are good conductor of electricity, and due to this reason, इसी reason की वजह से जो metals हैं वो use की जाती हैं to making the electric wire. They are used to make electric wire. Like आपको पता है कि हम कॉपर की, एल्यूमिनियम की जो वायर्स यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, they are used because they allow the electricity to pass through them. So they are used as an electric wiring making metals because of this property, because they are good conductor of electricity. यहाँ पे हम examples लिख सकते हैं like aluminium, that silver. Silver is the best conductor of electricity. It's the best conductor of heat. It's also the best conductor of electricity. Also, like this copper, aluminium also we can write. Copper and aluminium are used to make the wires. Similarly, if we talk about the non-metals, they do not allow the electricity to pass through them. So they are not the good conductor. They are poor conductor of electricity. तो same चीज हम यहाँ पे भी consider करेंगे. Non-metals are poor conductor of electricity, but one exception, and it's very important. The exception of non-metal is the graphite. Graphite is the exception. It's a non-metals. ये एक non-metal है, but still being a non-metal, again it's a form of carbon. ये भी कार्बन की ही एक फॉर्म है, and it's a good conductor of electricity. It's a non-metal. ये non-metal है, but it's a good conductor. It's a good conductor of electricity. तो ये चीज आपको बहुत याद रखनी है. एक्सेप्शन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. So graphite is the exception of the conductivity. So this is the next property. Now come on to the next property, that is the hardness. All metals are hard. ये तो आपको भी पता है. The metals which are present around you like gold, silver, iron, aluminium, ये सब metals आपने देखी हैं. Generally all the metals are hard. They are hard that they cannot be easily broken down. इतनी hard होती है कि आसानी से break नहीं हो सकती. So we can say that metals are hard. Metals are hard. And in this case we can say that hardness जो होती है it depends or it varies from metal to metal. सभी metals एक जैसी hard नहीं होती. Iron और gold को अगर हम compare करें, iron is more hard than the gold. तो different हो सकती है hardness, but generally all the metals are hard. Like iron की अगर हम बात करें, due to the hardness property of the irons are used to make the railway lines, bridges and machine etc. इन सब कामों में हम iron को use करते हैं. Similarly, the gold is also hard and is used to make the jewelry items. It has lustrous property also, जिसकी वजह से भी ये jewelry items को making में use किया जाता है. So we can say that generally all the metals are hard, but here exceptions are there. इस केस में भी हमें exceptions देखने को मिलते हैं. The sodium and the potassium. पूरा नाम ही लिख देती हूँ मैं आपके लिए ताकि इजी रहे. Sodium and potassium. These two are the metals. ये दो जो है ये metals है, but still they are soft metal which can be easily cut by the knife.
ये मेटल्स इजीली कट कर सकते हैं, दे कैन बी कट बाय नाइफ, इन्हें हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। These are not hard metals and they are very important exception। मैंने बार बार कहा exceptions बहुत important है and these exceptions are also important। Now come on to the non-metals। Non-metals are not hard, they do not show the hardness when we put any weight on these non-metals, they can be easily broken down, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। But in this case again one exception is there related with the hardness of the non-metals। हम लिख सकते हैं the non-metals are not hard, they are not hard, but exception जो है that is the diamond। Diamond is a form of carbon, carbon again is a non-metal, डायमंड जो है वो कार्बन की ही फॉर्म है, बट स्टिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे हार्ड होता है। सो डायमंड इज द नॉन मेटल विच शो द हार्डनेस। तो हमें नॉन मेटल्स के केस में सिर्फ एक डायमंड एक्सेप्शन मिल रहा है जहां पे हमें हार्डनेस देखने को मिल रही है, जबकि मेटल जो है वो जनरली हार्ड होती हैं। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर, विच कैन बी इजिली कट बाय द नाइफ। सो दिस इज अबाउट द हार्डनेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Now coming to the last important property, that is sonority। Sonority is the property of producing sound by a metal when it strike with the hard material। जब भी हम मेटल को किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी बोलते हैं। So generally the metals which are hard, when they strike with something they produce the sound। So we can say that metals are sonorous, they have the property of sonority, they can produce sound। आपने देखा होगा कि विंड चाइम जो हम यूज कर रहे हैं या फिर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वायर बनाते हैं, ये सब चीजें जो है वो मेटल से ही फॉर्म की जाती हैं, क्योंकि ये चीज थिंग जो है मेटल जो है दे कैन प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। आपने मंदिरों में घंटी भी देखी है जो हम बजाते हैं, इट ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज व्हेन इट स्ट्राइक्स इट प्रोड्यूस साउंड। So metals are the sound producing capability, they are sonorous, whereas non-metals they do not produce sound because they are soft or they are gaseous, so they can't produce the sound। So these are the differences between metals and non-metals on the basis of all these physical properties। Now let's see the differences between the metals and non-metals on the basis of their physical properties। First, on the basis of physical state। Physical state हमने जैसा देखा, metals are solid at the room temperature, only mercury is the metal which is found in the liquid state। Similarly, the non-metals are generally solid or gaseous, only the bromine is the non-metal which exists in liquid state। Second, malleability or ductility। So we can say that metals are malleable and ductile। यहाँ पे example जो exception हमने देखा था वो zinc का था। Zinc is a brittle metal, whereas the non-metals they are neither malleable nor ductile। इनमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती, ना malleability की ना ductility की, they are brittle in the solid form। Next है luster। Metal are lustrous, they have shiny appearance, whereas non-metals they are not lustrous, they do not show shine। Exception है iodine and graphite। Next, conductivity of heat। Metals are the good conductor of heat except the bismuth and which is the poor conductor of heat। यहाँ पे ही एक और exception add किया गया है। Similarly, the non-metals are poor conductor of heat। Hardness की जब हम बात करते हैं, metals are generally hard except the sodium and potassium which can be cut with the help of knife, whereas the non-metals are quite soft, but diamond is the exception which is the hardest substance in the nature। Electrical conductivity, generally all the metals are the good conductor of electricity, but non-metals are the poor conductor, and exception is graphite which is a poor conductor of electricity। Sonority की अगर हम बात करें, metals are sonorous whereas the non-metals are non-sonorous। So that's all about the physical and chemical properties of metals।